Hello there, welcome back to my channel. How are you all guys? I hope you all are good and learning this language with me. So now let's get started our video. So today I'm going to talk about in this video that how can you start talking in English. This video is only for beginners who are just beginners in English. I'm not saying that this video can be only listened by the beginners. Others can also listen this video, but mainly for beginners who have just started their journey of learning English. And why it's only for beginners? Because in this video I'm going to talk about that how can beginners learn English from starting. Okay, how can they start speaking in English? So guys, if you are just beginner in English and you are going to talk in English but you do not know that how can you talk, about what you should talk, what kind of sentences you should make in English, and what kind of things you should talk in English, like what you can talk in English easily. So guys, firstly, try to learn 5 words in your whole day. I'm not saying that you have to learn 100 words in your whole day. I'm just saying that you should just learn 5 words. For example, happy, sleepy, chair, food, and mesmerizing. So there are 5 words which we have. Now we are going to make sentences by the use of these words. This is what you have to do, guys. Try to pick out simple words at the very first time. Don't start from the difficult words, because if you will make sentences by the use of difficult words about which you do not know, and you do not know the right definition of those words, so how can you make good sentences by the use of those words? No, you are not going to be make right sentences. So firstly, pick out some simple words. For example, we have picked out 5 words which are very simple, and the last one maybe some of you guys do not know, but I will talk about this word because I think you will learn this word from this video from me. Okay, so firstly, let's make our first sentence by the use of word that is happy. So you could say that I am very happy today because I am speaking in English, or I am going to speak in English today. मतलब मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ because आज मैं इंग्लिश में बोलने जा रही हूँ. So you have made one sentence by the use of one word, and this is a very simple sentence. I am very happy today because I am going to talk in English today. So this is a very simple sentence, and you have made this sentence. I know, guys, you think that learning English is just like that kind of nut which is very difficult to break, which is very difficult to break. No, let's crack this nut together. We will crack it. Okay, so don't think that English is a difficult nut to crack. Okay, we'll crack it together. Now let's make our second sentence by the use of second word. So second word is sleepy, right? No, so what you can say, I'm feeling very sleepy today because I am so tired. I have done a lot of work. मैं बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रही हूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है. Very easy. We have made second sentence by the use of one word. Okay, हम दूसरे सेंटेंस भी बना चुके हैं अपने दूसरे वर्ड की सहायता से. This is what you guys have to do. Just try to learn 5 words on your daily basis. 5 वर्ड लर्न करने का ट्राई कीजिए अपने डेली बेसिस पे.
सबसे पहले वही वर्ड्स यूज करने हैं जो आपको पहले से आते हैं, उन्हीं वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं। मतलब जो भी वर्ड्स आपको आते हैं अपनी डेली लाइफ में आप उन वर्ड्स को कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे उनको सेंटेंस में ला सकते हो, वैसे यूज़ करना है। क्योंकि वर्ड्स तो आपको आते ही हैं, आपने कभी सेंटेंसेस नहीं बनाए होते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक सेंटेंसेस बाय द यूज़ ऑफ सिंपल वर्ड्स। हमने 2 सेंटेंसेस बना लिए, अभी हम तीसरा सेंटेंस बनाते हैं। तीसरा वर्ड क्या था हमारा? Milk. Am I right? Yes, I'm right. Milk. So you can say that whenever you are going to have your breakfast, and in your breakfast you have to like drink milk. So at that time I always think that, oh, this milk is too old. I don't want to drink this milk. I want to have something else. So this is how we have made our third sentence by the use of word milk. Now let's make our fourth sentence. Our fourth sentence is, our fourth word is, firstly we have to get to know what the fourth word. What is our fourth word? Maybe bread. I just forgot about our fourth word. Okay, let's make sentence by the use of word that is bread. So what you can say in sentence by use of this word? You can say that what you can say? I have some breadcrumbs for having in the breakfast. मतलब मेरे पास कुछ ब्रेड क्रम्स हैं, कुछ बासी रोटियां हैं, या मेरे पास कुछ बासे ब्रेड्स हैं जो कि मैं अपने ब्रेकफास्ट में खाने वाली हूँ, है ना? We have made our fourth sentence. Now let's make our fifth sentence and the last word, which might you guys think that may be but difficult to understand. That is mesmerizing. Am I right? Yes, I'm right. Okay, so mesmerizing. So firstly, the meaning of mesmerizing is attractive. Okay, the meaning of mesmerizing is attractive. You can note down this word in your book if you want to learn this word. But right now you would learn this word in a very good way, because I'm going to make sentence by the use of this word. So mesmerizing. The personality of my English teacher is very mesmerizing, because whenever she talks in English, she looks like she is a foreigner. मतलब मेरी टीचर की जो कि इंग्लिश पढ़ाती हैं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। जब वो इंग्लिश में बोलती हैं वो ऐसा लगता है कि कोई फॉरेनर बोल रहा है। तो मुझे उनकी पर्सनैलिटी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। Her personality is very mesmerizing whenever she talks in English or whenever she gives lecture about English. Okay, मतलब अभी हमने अपना फिफ्थ सेंटेंस भी बना लिया by the use of fifth word. So हमने 5 सेंटेंसेस बनाए 5 वर्ड्स से। मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको 5 वर्ड्स लर्न करने हैं। वो वर्ड्स आपको पहले से आते हैं, एक वर्ड ऐसा लर्न करने की कोशिश करो जो कि आपको नहीं आता। 5 वर्ड्स याद कर लिए, उनको सेंटेंसेस में यूज़ करो। जैसे ही अपनी डेली लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, उन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में सेट करने की कोशिश करो। देन ट्राई टू मेक सेंटेंसेस बाय द यूज ऑफ दोज वर्ड्स। ओके गाइज, एंड दिस इज हाउ you are gonna learn English. You are going to learn English. Okay guys, and that is why मैंने अपने thumbnail पर लिखा था कि this video is mainly for beginners, because इंटरमीडिएट लर्नर्स जो होते हैं, जो एडवांस लर्नर होते हैं, वो तो सेंटेंसेस ऑलरेडी बनाना जानते होते हैं, तो उनको इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता। बट जो बिगनर्स होते हैं उनको तो सेंटेंसेस बनाने में ही सबसे पहले दिक्कत आती है। जैसे कि मुझे थी, जब मैं बिगनर थी, है ना, उस टाइम पे मैं पंजाबी मीडियम से आई थी, तो मुझे इंग्लिश में बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। सो आई हैव अप्लाइड दिस टेक्निक इन माई लाइफ टू लर्न इंग्लिश, फॉर लर्निंग इंग्लिश।
Okay, then now I'm at this phase that I can have conversation with anyone. So you can also apply this technique in your life for learning English, for starting your journey of learning English. Okay, guys, and that's all for today. If you have learned something from this video, if you have learned something new from this video, so please subscribe my channel and like this video and share this video with those kind of learners who are eager to learn English, who are eager to learn English like me, जो कि मेरी तरह इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं, जो आपकी तरह इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं. ये वीडियो उन्हीं के साथ शेयर करना, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि किसी का टाइम ख़राब हो, और मैं ये भी नहीं चाहती कि कोई ऐसा लर्नर हो जो कि इंग्लिश सीखना तो चाहता है बट उसको पता नहीं चल रहा कि उसको इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे सीखनी स्टार्ट करनी चाहिए. अगर आपको इंग्लिश मतलब कि आपको ग्रामर आती है बट आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, तो तब भी ये स्टेप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं. पर आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा. तो स्टार्ट फ्रॉम हियर. ट्राई टू मेक सेंटेंसेस विद द यूज ऑफ सिंपल वर्ड्स. ट्राई टू मेक सिंपल सेंटेंसेस. मैंने पहले भी कहा इस वीडियो में, मैं अभी भी कह रही हूँ कि डोंट स्टार्ट फ्रॉम द डिफ़िकल्ट थिंग्स. कभी भी डिफ़िकल्ट चीज़ से स्टार्ट नहीं करना है. ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम सिंपल थिंग्स. सिंपल वर्ड्स उठाइए, then try to make sentences by the use of those words. Then try to think that where are you making mistakes while making any kind of sentence. Then try to get to know about the right structure of making sentences. मतलब सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर भी सीखने की कोशिश करिए साथ साथ में, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है कि हम कभी कभी गलत सेंटेंसेस बनाती हैं, कभी कभी नहीं, मोस्टली हम गलत सेंटेंसेस बना ही देते हैं, क्योंकि वो हमारा लर्निंग फेज होता है. ओके, लर्निंग का टाइम होता है, तो नो वन इज़ परफेक्ट, बट प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट. मतलब प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट करने वाली है. सो ट्राई टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. टॉक टॉक टॉक. इट्स द मेन रूल फॉर लर्निंग इंग्लिश. टॉक टॉक टॉक. Talk in English. Talk in English as much as you can, because it's gonna help you. It's gonna make you a fluent speaker in your future. It's gonna help you a lot. Okay, guys, and it's a kind of major step for going to be a good English communicator. Okay, guys, and that's all for today. And once again, please like this video and share my channel and share my videos as much as you can, because that's a kind of big help for me. Okay, that will help me to grow my channel. That will help me to proliferate my whole methods related to learning English. Okay, guys, thank you, and that's all for today. And follow for more.